અંકલેશ્વર ખાતે આજે ગૌ પ્રેમીઓ અને વિવિધ હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા ગૌ માતાના સંરક્ષણ અને સન્માન કાજે એક વિશાળ જનજાગૃતિ અભિયાન સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. ગૌ માતાને રાષ્ટ્રીય ધરોહર જાહેર કરવાની મુખ્ય માંગણી સાથે ગૌ ભક્તોએ એકત્રિત થઈ અંકલેશ્વર મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું અને સરકાર સમક્ષ પોતાની પડતર માંગણીઓ અંગે રજૂઆત કરી હતી. અંકલેશ્વર શહેરમાં આજે ગૌરક્ષા અને સન્માન મિશન અંતર્ગત ભક્તિમય અને આક્રોશપૂર્ણ માહોલ જોવા મળ્યો હતો. અંકલેશ્વરના સમસ્ત ગૌપ્રેમી મંડળ તેમજ અન્ય સ્થાનિક સંગઠનો દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં ગૌ ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા. મામલતદાર કચેરી પહોંચેલા ગૌ પ્રેમીઓએ સૂત્રોચ્ચાર કરી ગૌ માતાના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે કડક કાયદાકીય જોગવાઈઓની માંગ કરી હતી. મામલતદારને સોંપવામાં આવેલ આવેદનપત્રમાં મુખ્યત્વે ગૌ માતાને ભારતની રાષ્ટ્રીય ધરોહર જાહેર કરવા, સરકારી ચોપડે નોંધાયેલી ગૌચરની જમીનોને દબાણમુક્ત કરી તેમાં સુધારણા લાવવા અને હાલમાં કાર્યરત ગૌશાળાઓને પાયાની સુવિધાઓ સહિત આર્થિક સહાય પૂરી પાડવાની માંગણીઓ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ગૌ ભક્તોએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ગૌ માતા ભારતીય સંસ્કૃતિનું અભિન્ન અંગ છે, ત્યારે જતન માટે સરકાર વધુ સક્રિય અને અસરકારક પગલાં ભરે તે અનિવાર્ય છે. આ આવેદનપત્ર આપવાના કાર્યક્રમમાં અંકલેશ્વર રામકુંડ આશ્રમના મહંત પૂજ્ય ગંગાદાસ બાપુ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમણે ગૌરક્ષાના આ કાર્યક્રમમાં સૌને સહભાગી થવા આહવાન કર્યું હતું. તેમની સાથે વિવિધ સામાજિક અને ધાર્મિક અગ્રણીઓ તેમજ કાર્યકરોએ જોડાઈને ગૌ માતાના હિતમાં પોતાની અવાજ બુલંદ કરી હતી. जय श्री राम, वंदे गौ मातरम। भारतवर्ष में आखा देश में एक अभियान चालू करवामां आव्युं छे, गौ माता आह्वान अभियान। आ अभियान में मुख्य बे मुद्दा है। गौ माता ने राष्ट्रमाता घोषित करो और गौ हत्या संपूर्ण बंद थाय अने एनी उपर कड़क में कड़क कायदा थाय एवी अपील। साधु समाज एमां कोईनुं नाम नथी, कोई पार्टी नथी, कोई नेता नथी, स्वयं आपणे जाते आ अभियान में जोड़ायेला छे अने समग्र भारत वर्ष में आज ठेर ठेर जग्याए तालुका जिला में आवेदन पत्रों आप्या छे। साधु संतोए अंकलेश्वर में कम से कम 30 થી 32,000 गौ भक्तों की साइन करीने आज अंकलेश्वर मामलतदार कचेरीए मामलतदार श्री ने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं छे। आ सही करेला जे अमारा जे फॉर्म छे ए बधा राज्यपाल श्री, महामहिम राष्ट्रपति श्री अने वडाप्रधान श्री अने गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री सुधी आ साइन करेला बधाय कागळो त्यां पहोंचता करशे मामलतदार श्री। अने विशेष आ बधा ज्यारे ज्यारे गौ माता माटे आवुं कोई अभियान छेड़वामां आवे त्यारे बधा ज गौ माता भक्तो तमाम हिंदू भाईओ आमां साथ आपे। आमां मुस्लिम भाईओए पण सहयोग करी छे, कारण के पशुपालक होय ए पण पशुओना प्रेमी छे, गायो गौ माताना प्रेमी छे। तो बधाए साथे मळीने आ अभियान ने साथ आप्यो छे। खूब खूब हूँ तमाम हिंदू भाईओ भक्तों हूँ खूब खूब आभार मानु छुं। जय श्री राम, वंदे गौ मातरम। जय श्री राम, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। आज हम सब हिंदुओं के लिए बड़ा ही गौरव का दिन है कि हम सभी सद्गुरुदेव भगवान के साथ में अंकलेश्वर की पावन नगरी में गौ माता के सम्मान के लिए गौ आह्वान पत्र को लेकर के मामलादार में आए हैं, मामलादार साहब को देने के लिए, जिसमें गाय माता राष्ट्रमाता घोषित हो। गाय माता को संपूर्ण तरीके से हमारे राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, संपूर्ण तरीके से गौ हत्या बंद हो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि हमारे ठाकुर जी स्वयं कहते हैं गावों में अग्रह संतु। वेदों में कहा गया है हमारी गाय माता के हृदय में ठाकुर जी का वास होता है, और ऐसी गाय माता को आज जगह जगह पीड़ित किया जा रहा है। तो हम सभी सनातनियों के हृदय में बड़ी ही पीड़ा है गाय माता को लेकर, इसीलिए वो गौ हत्या, गौ माता को पीड़ित करना ये दुनिया वाले बंद करें। इसी को लेकर के जिस हृदय में गोपाल निवास करते हैं, उस गोपाल की रक्षा के लिए, जिस हृदय में सारे देवी देवता निवास करते हैं, ऐसी गौ माता की रक्षा के लिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जा दिन धरा धेनु न होई, रसा रसातल ताछन होई। जिस दिन धरती पर गाय माता नहीं रहेगी, ये पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। तो हमारी पृथ्वी की रक्षा के लिए, इसीलिए गौ माता की रक्षा के लिए आज हम सब एकजुट होकर के आए हैं। सभी सनातनियों से निवेदन है आप लोग भी अपनी आवाज उठा करके और हमारी गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। गाय बचेगी, देश बचेगा, देश बचेगा तो हम सनातनी बचेंगे, और हम सनातनी बचेंगे तो हमारे धर्म की सर्वोत्तम रक्षा होगी और हमारा सनातन धर्म उच्च शिखर पर राज करेगा। इसीलिए जय गौ माता, वंदे गौ माता, भारत माता की जय। जय